सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। अमेरिका विच कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसां की गिनती 3 लाख तो हुई पार। राष्ट्रपति ट्रंप दे विरोधियों के निशाने ते विरोधी सांसदां ने माड़े प्रबंध दे लगाए दोष। अमेरिका ने कोरोना के दबाव में भारतीय डॉक्टर ग्रैजुएट्स लिए खोले दरवाजे। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मैडिकल ग्रैजुएटां लिए मसौदा तैयार। विदेशी लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरां नूं दिता जा सकेगा अस्थाई लाइसेंस। टोरंटो में कोरोना वायरस के वध रहे मामले। अधिकारियों वालों पब्लिक हैल्थ दी हदायतां की पालना करने की अपील। 27% केस कम्यूनिटी ट्रांसमिशन नाल संबंधित। ते हुण खबरां दा विस्तार। अमेरिका ने कोरोना के दबाव में भारतीय डॉक्टर ग्रैजुएट्स के लिए दरवाजे खोले ने। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दे विच अस्थाई तौर पर मैडिकल ग्रैजुएट्स के लिए मसौदा तैयार किया गया है, जिस विच सैकड़े भारतीय भी शामिल ने। इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए रिटायर और मैडिकल स्कूल के विद्यार्थियों नूं भी भर्ती का बीड़ा चुकना पिया है। दोवें सूबियां दे राज्यपालां ने इस हफ्ते इस ते दस्तखत कीते ने ताकि ट्रेनिंग लई अमेरिका विच विदेशी जन्म और विदेशी लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरां नूं अस्थाई लाइसेंस दिता जा सके। जेकर होर सूबियां ते वाशिंगटन विच भी इस फैसले का समर्थन किया जाता है तो इस बदलाव का लाभ 100 तो ज्यादा भारतीय डॉक्टरों को मिल सकता है, जो कि वर्तमान में J1 और H1B वीज़ा ते अमेरिका विच ने। J1 वीज़ा ते हर साल लगभग 4000 विदेशी डॉक्टर, जिन्हां विच 1/3 भारतीय हुंदे ने, अमेरिका विच टीचिंग हस्पतालों में काम करन जां प्रवास करन दे इरादे नाल आउंदे ने। सख्त पाबंदियां दे कारण कुछ लोग ही महंगियां सेहत सहूलतां अमेरिकी डॉक्टर लाइसेंसिंग प्रीखियावां विचों गुजरन दे बाद कामयाब हुंदे ने। सालाना लगभग 2000 विदेशी डॉक्टरों को यह मौका मिलता है। कोविड-19 महामारी के नाल जूझ रहे अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क नूं चीन ने 1000 वेंटीलेटर दान किए ने। राज्य में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले 1 लाख तो वध होने के कारण अधिकारी रक्षा उपकरणों की घट सप्लाई होने नाल परेशान ने। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि न्यूयॉर्क ने फैडरल सरकार तो 17000 वेंटीलेटर की सप्लाई के आदेश दिए सन, जिथे देश के लिए 10000 वेंटीलेटर ही स्टॉक विच ने। उन्होंने कहा है कि पूरे अमेरिका में जीवन रक्षक मैडिकल उपकरणों की मंग वधी है। कोविड-19 के 3 लाख तो वधेरे मामले सामने आए ने। उन्होंने कहा है कि चीन इस सब की सप्लाई कर सकता है। वेंटीलेटर PPE सब कुछ उसके कोल है। उन्होंने कहा है कि वेंटीलेटर की मंग पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क चीन में खरीददारी कर रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसां की गिनती 3 लाख तो पार हो गई है। ट्रंप सरकार इसके प्रसार को रोकने में हुण नाकामयाब नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप विरोधियों के निशाने ते आ गए ने। विरोधी सांसद और मेयर ने उन्होंने माड़े प्रबंध से दोष लगाए ने। उन्होंने लगता है कि ट्रंप की गलती नाल ही लखां निर्दोष जिंदगियां तबाह हो जाणगियां। मिनेसोटा तो डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर ने ट्रंप ते कोरोना वायरस नाल नजिठण विच माड़े प्रबंध के दोष लगाए। उन्हों का दावा है कि ट्रंप के कारण देश में लखां जानां जाणगियां। एक अमेरिकी टीवी इंटरव्यू दौरान उमर ने कहा है कि जिवें जिवें दिन लंघ रहे हैं यह साफ होंदा जा रहा है कि किवें इस प्रशासन ने अमेरिकी जनता को बुरी तरह निराश किया है। अफ्रीकी मूल की सांसद उमर ने राष्ट्रपति ट्रंप पर दोष लगाया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को अणगौलिया किया और यकीनन करने में सफल रहे कि देश में लोड़ींदे टेस्ट हो रहे हैं या नहीं। कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कदे कदे कोरोना नाल संबंधित सकारात्मक खबरां भी आ रही ने। इसी तरह की एक चंगी खबर कोरोना महामारी नाल बुरी तरह प्रभावित अमेरिका तो आई है, जिथे एक 6 साल का लड़का कोरोना नूं हरा के हस्पताल तो घर परत आया है। लोग इस लड़के नूं हीरो कह रहे हैं। यह मामला अमेरिका के टेनेसी सूबे का है। लड़के की मां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी है। इत्थे रहण वाले 6 साल के जोसेफ बोसैन ने सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की फेफड़े की बीमारी नाल पीड़ित होने के बावजूद भी कोरोना वायरस नूं हरा दिता है। कोरोना वायरस के नाल जिथे पूरी दुनिया पीड़ित है, इस दे खात्मे दे लई जी जान नाल यतन भी किए जा रहे हैं। उत्थे ही मौजूदा दौर में अमेरिका में कोरोना नाल इन्फेक्टेड नागरिकों की गिनती बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी प्रशासन ने होर देशों में रह रहे अपने नागरिकों को भी देश में लियाउण लई कवायद शुरू कर दी है। इस दे तहत उसने भारत में रह रहे 600 तो ज्यादा नागरिकों को अमेरिका लियाउण दे लई 2 चार्टर्ड जहाज़ों की व्यवस्था की है। उक्त जानकारी सैन होजे विखे पंजाब फाउंडेशन के चेयरमैन सुखी चाहल ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। ते गल करते हैं कैनेडा की, जिथे कोरोना वायरस का कहर लगातार वध रहा है। ओंटारियो प्रोविंस में कोरोना वायरस के नाल होने वाली मौतों बारे भविष्यवाणी की गई है। इस बारे सेहत अधिकारियों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। उन्होंने दस्सिया कि जेकर मौजूदा हालातों के अनुसार कोशिशां अते केस जारी रहे तो 1600 मौतां अप्रैल महीने में हो सकदियां ने ते कोरोना वायरस के नाल 3000 तो 15000 मौतां भी हो सकदियां ने। पर जेकर हालात काबू तो बाहर होए, वायरस तेजी नाल वधिया उपाय ना किए गए तो अप्रैल महीने में 6000 मौतां भी होणगियां।
ਪੂਰੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। I want to turn now to perhaps what might be the most disturbing slide in this deck for those who have the deck to hand, and that is the slide which is on page 13. I think it's important that we all are robustly realistic about the scale of the challenge that we face. And what this slide shows is the projection by Public Health Ontario, which is in line with that of other highly credible modelers, that says that over the full course of this pandemic, which may last for 18 months or even 2 years, because we may have a smaller secondary or tertiary wave, over the full 2-year course of the pandemic, had we done nothing, Ontario may have suffered 100,000 deaths. Thankfully, that is not the position that we are in, because of the very detailed actions that I read out to you before, which have been taken in response to emerging science. We believe that if we do all that we can get a much better end result for the province. It is not possible to be exact about where we will end up. But I think it is reasonable to say that if we do everything that we can think of, everything that already has been done stays in place, all of the other measures which are being considered put in place, that I think we could reduce the death toll in Ontario to somewhere between 3,000 and 15,000. There is a range, because where we end up depends on all of us. If we follow the rules, if we do our best to socially distance, if we look after the elderly and the vulnerable in our society, we can get within that range, and we can strive to get as low as possible within that range. So I appreciate that to many people, these will be shocking figures. But the important thing to stress again is that effective actions have been put in place, remain in place, and further actions are being proposed and are being taken. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Brightest minds we have to provide you with a full briefing on the latest situation. I've asked our experts to provide you with the same briefing, the same information that I have access to as Premier. I want to thank Drs. Anderson, Donnelly, Williams, and Brown. These are some of the incredible experts that are working with us. And today, you saw some drastic numbers. These numbers are stark, and they're sobering. They tell a story. These numbers tell the story of Ontario's fight against COVID-19. And the reality is, the early chapters of our story have already been written. And there's some things that are out of anyone's hands. But what matters is that the ending of our story is still up to us.
And if we work together, we can write the last chapter of our story. Because these forecasts are projections. And they can change with your actions and with the government's actions. We've seen today that we can lower these numbers. We can slow the spread and flatten the curve. But as it stands, by the end of this month, we could see as many as 80,000 people in Ontario inflicted with this terrible virus. Over 1,600 people could be dead by the end of April. I know that businesses are struggling to stay afloat through these rough waters, but lives are on the line, and we must take this action now. Effective Saturday, April the 4th at 11:59 p.m., we'll be directing additional workplaces to close. All industrial construction except critical industrial projects will stop. Only necessary infrastructure projects like hospitals and transportation will continue. No new residential construction will start. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 462 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3255 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 32 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਮਰੀਜ਼ ICU ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 5500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ 1245 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। As of the data for 4 p.m. yesterday, as reported in the Integrated Public Health Information System by public health units in Ontario, we have a total of 3,255 confirmed cases of COVID-19 in Ontario. This is an increase of 462 cases from the previous report and includes, unfortunately, 67 laboratory confirmed deaths. We're aware of at least 32 outbreaks in long-term care homes, which are related to 24 deaths, some of which would be lab confirmed, some would be epidemiologically linked to the cases. The good news, we're continuing to see an increase in the cases that have been resolved. We're now at 1,023 resolved cases. In terms of hospitalizations, we currently have 462 patients with COVID-19 in hospital in Ontario. Of those, 194 are in ICU or intensive care unit, and of those, 140 are currently on a ventilator. The laboratory testing, at this point in Ontario, almost 67,000 people have been tested for COVID-19. We have, in the last 24 hours, processed close to 5,500 tests, and what we used to consider a backlog, we currently have 1,245 tests for 1,245 people are still in progress, and if you consider that is well within the daily testing capacity, so really should not be considered a backlog at this point. Thank you. So thank you on that. And as you heard from Dr. Donnelly and from Dr. Brown and from Matt Anderson, what we need to do more of and how we can endeavor to keep those numbers down and to not only flatten the curve, but to even push it down further, I think is within our grasp. As you saw those numbers, they're not talking about 4 or 5 months off. The numbers were actually until the end of the month. And then further beyond that. So our task is ahead of us, and I think we need to work at that even further. Now, we've already put more measures in place for the long-term care sector, working with the Ministry of Long-Term Care and with the public health departments who work with the long-term care facilities. Those new directives just came out this week. We are assessing the ability and the capacity to deliver on all those components and to assist where necessary to endeavor to implement
these new measures in that regard. Increasing the testing, increasing the surveillance, limiting the visitors, ensuring our healthcare workers are protected in various ways, and to make sure that we are backing it up with accurate data collection and monitoring of those situations. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 986 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 812 ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਅਤੇ 174 ਸੰਭਾਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 3000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। As of 1 o'clock this afternoon, there are 986 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 812 confirmed cases and 174 probable cases. There are 89 cases in hospital and 42 in intensive care units. Approximately 27% of our cases are attributed to community spread, and there have been 13 COVID-19 deaths in total thus far. Again, I extend my sincerest condolences to the friends and families of all individuals who have died from COVID-19 in our community. Earlier today, as you've just heard, the province released COVID-19 modeling projections that stated that there would have been approximately 100,000 deaths over the course of the COVID-19 outbreak without public health measures. The province also said that if we do everything that we can, fully implementing all available tools and public health measures, especially those that maximize physical distancing, we may reduce this number to something in the range of 3,000 to 15,000 deaths in Ontario from COVID-19. Now, we know that Toronto is home to about 20% of the population of Ontario. So using the provincial numbers, we would roughly estimate that Toronto may see somewhere between 600 to 3,000 deaths by the end of this pandemic. I know these numbers are stark. Seeing what our future may look like based on these data is truly sobering and even frightening. But these are more than just numbers. They are our friends, our families, our neighbors, members of our community. They are our essential workers, our healthcare workers, and they are the people who work each and every day to help keep us safe. Most of all, these deaths are preventable. This is what keeps me up at night. We each have an opportunity and a personal responsibility to prevent this from happening. This is why everyone who can, everyone who is not an essential worker or a healthcare worker needs to stay home now. Everyone needs to be adhering to the public health measures put in place to save lives, to protect our healthcare system from being overwhelmed, and to restore our city. If we all do our part, if we all do as much as we can still reduce these numbers. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 53 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1174 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 641 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 146 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। For our case update today, we have 53 new test positive cases in British Columbia, making our total number of cases who have tested positive in the province 1,174. That includes 541 who are in the Vancouver Coastal Health Region, 412 in the Fraser Health Region, 74 on Vancouver Island,
health region, 126 in the interior health region, and 21 now in the northern health region. In addition, we have one more additional long-term care home outbreak to report today to bring our total of outbreaks in long-term care to 22. That includes a total of 176 of our cases, and really reflects the difficulty that we have in outbreaks in long-term care. I think, though, that we are heartened by the fact that the recent ones have been identified where a single staff person or a single resident has been testing positive for the disease. And we know that both in Vancouver Coastal and in Fraser Health, they have now very active outbreak teams for long-term care. And the measures that we've been putting in place in long-term care and assisted living means that these are being identified very early, and we are able to control them. So the vast majority of the cases, unfortunately, are related to two of the earlier outbreaks at the Lynn Valley Care Centre and at Harrow Park. The slightly positive good news today is our hospitalizations have gone down slightly to 146 people who are currently in hospital, and of those 64 are currently in the critical care units or ICU. On the more sad note, we have had an increase in deaths once again, with 4 more people who have succumbed to this disease. And again, related, 3 of them were related to the outbreaks at Harrow Park or Lynn Valley. And our condolences, of course, and our thoughts go out to the family members and the care providers for those people. We now have 641 people who have completely recovered from this disease. I wanted to talk a little bit to some of the young people who may or may not be watching, but I'm thinking, I was talking with some of the youth in my life, and I recognize that this is a very challenging time for teenagers in particular, to be stuck home with your families maybe, to not have those social interactions that you're used to having with your friends at schools, and the uncertainty about what's going to happen in the next few months. Particularly for those who are finishing high school, the challenges about what's going to be happening, about university, about jobs in the future. And I know that can be very challenging for young people and very challenging for all of us to know how to deal with. And I just want to say, this is a transitional period in your life, and what is happening now is extraordinary, and you need to be comfortable in reaching out and find those trusted adults in your life. Don't be afraid to talk to them about what's going on, about your anxiety, about your concerns. And these are opportunities for us to work together with the young people in our life, to look up things, to find a trusted source of information, to try and put some normalcy, to address some of the concerns that young people have. रूस ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਈਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜਨ ਮੈਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। रूस के सरकारी टेलीविजन में इस काफले के सफ़र को दिखाया गया। पवित्र निशान को लैके 109 किलोमीटर का सफ़र तय करने तो बाद इसनू मास्को के एक कैथेड्रल में रख दिता गया है। चर्च के पादरी पैट्रियार्क क्रियल ने कहा है कि पवित्र निशान को लैके यात्रा उन्होंने कोरोना वायरस की इन्फेक्शन को खत्म करने की प्रार्थना के लिए की है। उन्होंने कहा कि रूस के लोग कोरोना वायरस को लैके सरकार दी पाबंदियों का पालन करन अते इस बारे जारी की गाइडलाइनस भी फॉलो करन। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।